Now we are going to discuss about moment of a force about a line. Again, same formula. Ijk in first row, second row is position vector or distance, and third row is force in terms of Ijk, force vector. So first step, when you have coordinates of a force and coordinates of a line, the moment of this force about line will be equal to force into distance. Now you have four options for distance. Distance between A to D, A to C, distance between B to C, and B to D. So as it is shown here, you have four options, and just convert this force into Ijk form by using unit vector and try to solve by considering any values and considering value of force. Now let's move towards the numericals that you are going to face. You are going to have more questions on only parallel forces. Now there are two methods to solve. One is matrix method that we discussed, and that is which is given in most of the books that you have. And the second method is by using simple Varignon's theorem. So question is find resultant of this force system, and we know in 2D system we also learned that when you find resultant we also need to find the distance of the resultant from a particular point. So here question is find resultant, and then we will also find the distance. So four forces are given, 4, 3, 5 and 6 kilonewton. Its coordinates are also given. In some equations you may need to determine the coordinates on your own. Sometimes they are given, sometimes they are not. So in this case at least coordinates are given. So first step, find resultant. Now all the forces are acting parallel to z axis, so summation of fx equal to 0 and summation of fy equal to 0, and summation of fz will be equal to r. So summation of fz, that is rz, equal to upward positive, downward negative, it is minus 8 kilonewton, that is 8 kilonewton acting in downward direction. So now we know resultant must be acting in downward direction. Now we need to find its coordinates, that is x and y coordinate in this case, because resultant is acting perfectly vertical. It will have, it will be acting in x y plane only, so it will have coordinate z as 0. Now for doing that, let's take moment about y axis. Now while taking moment about y axis, imagine you are looking from this side of this axis system, this side. So this 6 kilonewton for y axis will be acting anti-clockwise, 5 kilonewton acting will be clockwise, 3 will be acting anti-clockwise, and 4 will be acting anti-clockwise. Just multiply the force with distance. For example, 4 into 4, 3 into this distance 1, 5 into this distance 2, 6 into this distance 1. Consider sign conventions that we know, anti-clockwise positive, clockwise negative, and solve it. You will get value of x. Similarly, take moment about x-axis. Now you will get value of y. So when you are considering moment of resultant about x-axis, this is Varignon's theorem. Summation of moment of all the forces about any point is equal to moment of resultant at that point. So when you taking moment about y-axis, it will be the distance x that you will be getting, and when you are taking moment about x-axis, it will be the distance y that you are getting. So consider moment about x-axis and imagine you are looking from this side. So this will be clockwise, this will be anti-clockwise, this will be clockwise. This force is acting on x-axis, so it will not have any distance with respect to x-axis. So moment due to this force along with x-axis becomes 0. That's why it is not considered here, and that's how you solve it. 8 into y, clockwise it will be anti-clockwise for moment about y-axis, r into x, but when you are looking from this side it will be clockwise, minus 8 into y, and that's how you get value of y. The alternate method is use the coordinates. You have all the forces in terms of Ijk format. Now all the forces are vertically downward and one force is vertically upward acting along z axis, parallel to z axis. So accordingly give the sign conventions, find out the resultant like we did, and now use the matrix method. In this case you can take moment about any point basically, but let us consider origin because you can directly use the coordinates. कुछ x2 x1 करने की जरूरत नहीं है, सीधा you can use coordinates. So by using moment of force A, point A, in this case this force 3 kilonewton, about origin it will be ijk, second distance, and third force vector. Force is minus 3k, so fx, fy, and fz. So that's how OA is formed, matrix of OA is formed. Resolve it, solve it,
and you will get one equations. Similarly, get equations for OB, moment of force acting at B about O, then of C, and then of D. You will have four equations. Then determine moment of resultant about origin. You know the coordinates x and y, and f. Sorry, resultant is -8. So it is shown here ijk x comma y comma 0 and 0 comma 0 comma -8 in third row. So form the matrix like this, solve the matrix, and we know the Varignon's theorem, summation of moment due to all the forces is equal to moment due to resultant. तो सारे के सारे जो इक्वेशंस आपको मिले हैं you need to add it up, और उसके सामने जो रिजल्टेंट का इक्वेशन आपको मिला है आफ्टर सॉल्विंग द मैट्रिक्स शो इट. नाउ वी नो हाउ टू डील विद द वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन. तो सारे के सारे एडिशन कर लो यहाँ पे, और जो जो आई के साथ है उनको इक्वेट कर लो, जो जो जे के साथ है उनको इक्वेट कर लो, एंड यू विल गेट द सेम आंसर. This question is for homework. Try to solve it by both the methods and see whether you get the same answer or not. Again in this case, now here it is solved by simple use of Varignon's theorem. यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे अगर आपको Varignon's theorem यूज करना है यहाँ पे तो पूरा एक्सप्लेन कर लिया है, बट अगर आपको मैट्रिक्स मेथड यूज करना है तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो. जैसे कि अब ये b के कोऑर्डिनेट्स होंगे, x वाला कोऑर्डिनेट होगा ये x यानी पैरेलल टू x एक्सिस. देखो कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगा x 0.6, y होगा 0.9 and z होगा 0 because it is acting in xy plane. Similarly find coordinates for c and a तो origin ही है, so a will have 0 0 0 coordinates. Again form the forces in ijk form. So all the forces are vertically upward, so TAK, TCK, TBK. अब इसका weight जो है 5500 न्यूटन, it will be acting in downward direction along negative z axis, so it will be a negative value. So again form the matrix ijk. अब a का coordinate 0 0 है तो इसका value 0 आ गया. In case of b, tb, we know the coordinates x2 minus x1, y2 minus y1 यूज करके ये लिख लिया हमने, and tb is acting along z axis, positive tb, क्योंकि it is acting vertically upward. So that's how you get this equation. Similarly form equation for tc and then for weight. Now in this case हमें resultant तो find out नहीं करना है, so we can use the equilibrium conditions. Fx equal to 0, fy equal to 0. We get the values by getting these two equations, and then you can use fz equal to 0 for the whole figure, because we know for equilibrium summation of fz must be equal to 0, and that's how you find the last value of ta. And check it out, answers are same. Try to solve this numerical by both the methods. Now in this case matrix method is explained here. कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए यहाँ पे सबसे पहले, ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स, जो ये 200 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे शायद शो नहीं किए है उन्होंने फिगर में, बट 200 न्यूटन के फोर्स के लिए. और ये ओरिजिन, सी के कोऑर्डिनेट्स तो ओरिजिन है, डी के कोऑर्डिनेट्स है 2,0,0. आई थिंक समथिंग इज मिसिंग इन द फिगर. एंड ई के कोऑर्डिनेट्स हैं 1.5, यहाँ पे शो किया है मैंने. Please refer this figure for the coordinates. Again same method, use the matrix method and you will get the equations. जैसे यहाँ पे उन्होंने सारे equations find out कर लिए हैं, and then solve it accordingly. Moment at c equal to 0, और ये इससे रिजल्टेंट की वैल्यू मिल गई है, रिएक्शन बी की, सॉरी, मोमेंट एट सी बी से रिएक्शन एट ए की. क्वेश्चन है कि अगर ये रिएक्शन है, एंड सपोर्ट्स हैं ए और बी पे, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट. सो यू कैन यूज द मैट्रिक्स मेथड और यू कैन यूज सिंपल Varignon's theorem मेथड. अब रिएक्शन एट ए एंड बी तो एक एक रिएक्शन रहेगी, सो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए, यूज Varignon's theorem, और यहाँ पे Varignon's theorem यूज करके मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस लिया है, मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस. सेम मेथड जो हमने डिस्कस की थी पहले, बाय यूजिंग दैट यू कैन गेट द सेम आंसर्स. फॉर दिस न्यूमेरिकल आल्सो I have explained here. Now in this case I don't know why in the book they have considered this dotted line. This is also a method,
but you can avoid that. You can just take moment about the axis. That makes it simpler. So I have shown by taking moment about z axis also you can get the same answer. And alternative method is also there using matrix. So यहाँ पे question is pipe ABCD of length 1.8 meter having 90% bend. The pipe weighs 30 Newton per meter and supported by 3 vertical wires attached to the pipe. So यहाँ पे हमने क्या किया है कि उसका weight दिया हमें 30 Newton per meter. So 30 into 0.6, 18 will be acting from the center and 30 into 1, 30 into 1.2. So 36 Newton acting from the center, and that's how figure is considered. सो इन दिस केस अल्टरनेट मेथड में सबसे पहले तो टीबी टीसी टीसी और टीडी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किया. टीसी एंड टीडी आर एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, तो उनके वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स जीरो होंगे. सिमिलरली दिस फोर्स एंड दिस फोर्स आर एक्टिंग अलोंग जेड एक्सिस, तो उनके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स जीरो होंगे जैसा कि यहाँ पे शो किया है. सो फोर्सेस सारे के सारे एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस है. सो अकॉर्डिंगली उनको नोटेशन दिया है टी ए टी सी टी डी, और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव साइन दिया है. नाउ हमें फोर्थ कंडीशन भी पता है इक्विलिब्रियम की, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो. नाउ if you take moment of all the forces about origin, in this case b equal to 0, now you can do this also. जैसा मैंने ऊपर दिखा है आपको कि हर एक मैट्रिक्स अलग अलग लिखा है. there is no need to do that. if you want to save some space and if you want all the calculations in front of you while doing calculations to avoid any confusion, you can use this particular way कि सारे के सारे यहीं पे ऐड कर लो. हमें पता है मोमेंट ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इक्वल टू जीरो फॉर इक्विलिब्रियम. सो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म किया है एओ सीओ डीओ और 18 और 36 किलो न्यूटन का. गो थ्रू इट. सेकंड जो रो है वो डिस्टेंस है, थर्ड जो रो है वो फोर्स वेक्टर है. इससे हमें फॉर्म करके हमने ये कैलकुलेशंस कर लिए फ्रॉम वेक्टर कैलकुलेशंस. अब इक्वल टू जीरो है तो जीरो आई जीरो जे जीरो के, तो अगेन जो जो आई के साथ है उनका एडिशन किया, उसको सामने जीरो रखा, तो वी गॉट टी ए इक्वल टू 9 फ्रॉम द वैल्यूज विथ के. हमने उसका एडिशन करके हमें ये सेकंड इक्वेशन मिला. अब हमारे पास सबसे पहले एक इक्वेशन था समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो का, तो उससे हमें ये इक्वेशन पता था कि टी ए प्लस टी डी प्लस टी सी इक्वल टू 54. बाय यूजिंग दैट इक्वेशन after putting t equal to 9 we got td plus tc equal to 45. So by solving these two equations we got the values. So you can get the same values by using Varignon's theorem also. It's up to you which method to use. मैंने यहाँ पे ये न्यूमेरिकल बाय Varignon's theorem यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है. फाइंड आउट द रिजल्टेंट फर्स्ट. -20 -50 f1 और f2 की वैल्यू दी है यहाँ पे. रिजल्टेंट फाइंड आउट किया and by using simple Varignon's theorem, moment about x and y axis in this case, you can find distance, or you can go for the method of matrix by considering the coordinates, considering the forces in IJK format. You can solve it by this method also. I hope you have understood the space force system, resultant of space force system, finding out unknown force in space force system, and dealing with parallel force system using moment equations of Varignon's theorem or by using matrix method. तो मोमेंट कैसे फाइंड आउट करनी है और हाउ टू यूज द मैट्रिक्स मेथड फॉर putting equilibrium conditions for calculations. I hope you have learnt all this. I hope you have understood this. If you have any difficulty you can message me for the solution.